Nithyananda Paramashivam. Pada Puja on this auspicious occasion of the Quadrantis meteor shower, which is happening on the auspicious occasion of the Avatara Dinotsava. On the very day, Paramashiva decided to assume the physical body on this Bhumandala for the devotion of the devotees. Before we begin the Pratyaksha Pada Puja today, we request all the Pada Puja participants and everybody else who is participating in this puja physically here and online to declare the following with integrity and authenticity. If you agree to the following, please say yes loudly. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth that the cosmic energy exists. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth that the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nityananda Paramamashivam, is in my Vigraha, representation of that very cosmic energy. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth that whatever I offer to Swamiji during the Pratyaksha Pada Puja will reach the cosmic source of energy directly. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth of Sohamasmi, that even when I worship, I am Him. Yes. Let us now enter into the Pratyaksha Pada Puja. We request all the participants to please be seated with your head, neck and spine in a straight line. Be seated in the space of gratitude and deep restful awareness in your Ananda Gandha as we begin with the Sadguru Vandanam. Nityanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalavachalam Sarvadhi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami Nityanandeshwara Paramashiva Samarambham Nityanandeshwari Paramashiva Shakti Madhyamam Nityananda Paryantam Vande Guru Paramparam Tripundri Nitilakrita Kasturi Tilakaham Spuranwala Dhara Spurita Katikopi Navasanaham Dadhano Dustaram Shirasi Bhanirajam Shashikalam Pradipas Sarvesham Marunagiri Yogi Vijayate. The next is the Tattvachmanam, the ritualistic cleansing. Now, please keep your right hand in the Gokarna Mudra. Take an udharni of water into your right palm. Sip the water thrice as we chant the following mantras. Om Atmatattvam Shodhayami Swadha. Om Vidyatattvam Shodhayami Swadha. Om Shivadhayami Swadha. Please wash your hand with an udharni of water. With the base of your right thumb, wipe your lips twice as you chant the following mantra. Om Ham Hridayaya Namaha. Again wash your hand. With the tips of your right hand, index, middle and ring fingers joined together, touch above your upper lip and below your lower lip. Again wash your hands. With the tips of your right hand, index finger and thumb joined together, touch your right nostril, your left nostril. With the tips of your right hand, ring finger and thumb joined together, touch your right eye, your left eye, your right ear and your left ear. Again wash your hand. With the tips of your right hand, little finger and thumb joined together, touch your navel center, the right chest, the left chest. With the tips of all five fingers joined together, touch above your head, the right shoulder, left shoulder and then the heart center. Again wash your hands. Next, we'll be performing Shuklam Bharadharam, invoking the presence of Nityananda
MahaParamashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Shivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda
MahaParamashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. We are completing for the technical glitch. Now, let us continue with the Shukla Ambaradharam, invoking the presence of Mahaganapati, praying to him for removing all the obstacles from this Pratyaksha Pada Puja. Take a few flowers and akshata in your hands, clench your hands into the Mushti Mudra, tap the sides of your forehead along with the mantra. Audio and video glitches are fixed now. Let us now continue with the Shukla Ambaradharam. Please take a few flowers and akshata in your hands. Tap the sides of your forehead. We are completing for the audio glitch. Let us now continue with the Shukla Ambaradharam. Please take a few flowers and akshata in your hands. Clench your hands and tap the sides of your forehead along with the mantra. Om Shuklambaradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye. Next is the pranayama. Continue to keep the akshata in your right hand. Now open only the little finger, ring finger and the thumb, holding the flowers and akshata with your index and middle fingers. Now, during the pranayama, use the thumb to close your right nostril and the ring finger and the little finger to close the left nostril. Now, closing the right nostril, inhale slowly through the left nostril. Once you have inhaled fully, close both the nostrils and hold the breath inside as long as possible. And then exhale through the right nostril alone very slowly. During this process of inhalation, retention and exhalation, we'll be chanting the Pancha Brahma mantras and the Sharanga mantras, which are collectively called as the Samhita mantras. Om Hum Ishanamurdhaya Namo Him Tatrashapaktra Namo Hum Agora Hridaya Namo Him Amadev Gokhyaya Namo Hum Sadyajatmurte Namo Hum Hridaya Namo Him Sharsena Namo Hum Shikhaya Namo Him Kauchaya Namo Hum Netribhyo Namo Hastraya Namo Om Hum Ishanamurdhaya Namo Him Tatrashapaktra Namo Hum Agora Hridaya Namo Him Amadev Gokhyaya Namo Hum Sadyajatmurte Namo Hum Hridaya Namo Him Sharsena Namo Hum Shikhaya Namo Him Kauchaya Namo Hum Netribhyo Namo Hastraya Namo Om Hum Ishanamurdhaya Namo Him Tatrashapaktra Namo Hum Agora Hridaya Namo Him Amadev Gokhyaya Namo Hum Sadyajatmurte Namo Hum Hridaya Namo Him Sharsena Namo Hum Shikhaya Namo Him Kauchaya Namo Hum Netribhyo Namo Om Astraya Namaha. Next, we'll be entering into the Sankalpa, creating a conscious resolution for performing this ritual of the Pratyaksha Pada Puja. We request all the participants to be seated with your head, neck and spine in a straight line. Deeply connect with our beloved Guru, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nityananda Paramashivamam, in your Ananda Gandha. In the space of deep gratitude for having him in our lives, Paramashiva decides to land on the Bhumandala again and again for the devotion of the devotees. By the end of the Sankalpa, offer your heartfelt desire at the divine lotus feet of our beloved Bhagavan, praying to him to manifest it as a reality for you. Please clasp your hands, place them on your right thigh. Om Mamopata Samasta Duridakshayadvara Bhagavat Sri Nithyananda Paramashiva Prityartham Sri Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Sameta Sri Nithyanandeshwara Paramashiva Prityartham Cha Shubhe Shobhane Muhurte Adya Brahmanaha Dvitiya Parardhe Shri Shvetavaraha Kalpe
वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये शोभकृतनाम संवत्सरे दक्षिणायने लक्ष्मी वेंकटेश्वर ऋतौ धनुर्मासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां शुभतिथौ गुरुवासरयुक्तायां चित्रा नक्षत्र अतिगण्डयोग तैतिलकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ. We will now be chanting the Sankalpa for the participants who have offered the Pratyaksha Pada Puja today. नित्यानन्दगोत्रोद्भवायाः लोहिनीनां याः भरणीनक्षत्रे मेषरासो जातस्य लोहिनीराजगोपालनां याः केटैनक्षत्रे वृश्चिकरासो जातस्य राजगोपाल वेलदम्पिल्लै नामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे मीनरासौ जातस्य देवसेनन् राजगोपालन् नामधेयस्य तिरुवादिरैनक्षत्रे शुभरासौ जातस्य कुमुदिनी मुत्तुकुमारस्वामीनां याः सकुटुम्बस्य मानित्यसमर्पिणीनां याः श्री ग्रेगोरी बैशम नामधेयस्य श्री हैरी बैशम नामधेयस्य टेट नंदीपुर नामधेयस्य सकुटुम्बस्य नित्यानन्दगोत्रोद्भवस्य श्री नित्यनिर्गुणदेवन्नामधेयस्य लेस एमर नामधेयस्य हरोल्ड एमर नामधेयस्य हेडी एमर नाम याः रेमन आह्वा नामधेयस्य केत आह्वा नामधेयस्य गैरी आह्वा नामधेयस्य सकुटुम्बस्य तिरुवोणं नित्यानन्दगोत्रोद्भवस्य तिरुवोणं नक्षत्रे जातस्य श्री नित्यमुक्तानन्दा नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे जातायाः मानित्यमुक्तिकानन्दानां याः रेवती नक्षत्रे जातस्य सुहासुरेन्द्रन्नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे जातस्य आकाशसुरेन्द्रन्नामधेयस्य सकुटुम्बस्य चारी चौली मेनां याः गैन कॉन्ग होई नामधेयस्य ब्रायन गैन एंकिया नामधेयस्य यूजीन गैंग एंगहिन नामधेयस्य श्री नित्य ज्ञानप्रदाता नामधेयस्य पूची गैन नामधेयस्य सकुटुम्बस्य मानित्य गोविंद प्रियानां याः होहपा मरीनो नामधेयस्य सकुटुम्बस्य श्री नित्य बाणहस्तानंदा नामधेयस्य मार्गरेट एंड पर्किस नाम याः रॉजर क्ल्यू पर्किस नामधेयस्य सारा जेन लिंच पर्किस नाम याः साइमन डेविड पर्किस नामधेयस्य सकुटुम्बस्य मानित्यनाद प्रियानंदानां याः जोबिन याप ली थोंग नामधेयस्य शूग जिन हुई नामधेयस्य युओ डियान ई नाम याः लिन झाओ मिंग नामधेयस्य शू वांग यी फेई नाम याः कुटुम्बस्य नित्यानन्दगोत्रोद्भवायाः सोना कामत नाम याः विनय कामत नामधेयस्य इहन कामत नामधेयस्य हंस कामत नामधेयस्य एवन कामत नामधेयस्य कोको नाम याः सकुटुम्बस्य फिंग जीरोंग नाम याः
Xiao Nai Chang Namadheyasya, Xiao Zhiling Namadheyasya, Feng Wu Zhang Namadheyasya, Feng Zhi Fen Nam Yaha, Feng Zhi Fang Nam Yaha, Xiao Zhi Fu Nam Yaha, Sakudumbasya, Chen Qian Shueng Namadheyasya, Liao Feng Chi Nam Yaha, and Li Yue Nam Yaha, Chen Wei Swan Nam Yaha, Zhu Wenlong Namadheyasya, Zhu Tangjun Namadheyasya, Chen Yanji Nam Yaha, Sakudumbasya, Xunling Namadheyasya, Zhan Li Hong Nam Yaha, Xin Mugzman Nam Yaha, Xin Queen Gie Namadheyasya, Zhou Zhenxia Nam Yaha, Zhan Gongxiu Namadheyasya, Xin Bing Namadheyasya, Zhang Li Juan Nam Yaha, Zhang Li Jun Nam Yaha, Zhan Li Quin Nam Yaha, Zhang Li Long Namadheyasya, Zhan Li Ji Nam Yaha, Zhao Xinyu Namadheyasya, Sakudumbasya, Xinlun Namadheyasya, Zhang Li Hong Nam Yaha, Xin Mugzwan Nam Yaha, Xin Quin Gie Namadheyasya, Zhou Zhenxia Nam Yaha, Zhang Gongxiu Namadheyasya, Xing Bing Namadheyasya, Zhang Li Juan Nam Yaha, Zhang Li Yun Nam Yaha, Zhang Li Pin Nam Yaha, Zhang Li Long Namadheyasya, Zhang Li Ji Nam Yaha, Zhao Xinyu Namadheyasya, Sakudumbasya, Jinyang Parandhama Priya Nam Yaha, Jian Wen Namadheyasya, Dora Wen Nam Yaha, Mira Wen Nam Yaha, Guo Quang Yang Namadheyasya, Ailin Liang Nam Yaha, Ki Xiao Wen Namadheyasya, Jin Hua Wu Nam Yaha, Sakudumbasya, नित्यानंद गोत्रोद्भवायाः चित्रा नक्षत्रे कन्या रासो जातायाः मानित्य आत्मानां याः जिम वैस्क्वेर्स नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे ऋषिकरासो जातस्य जिम वैस्क्वेर्स नामधेयस्य सकुटुम्बस्य मौद्गल्यसगोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे ऋषिकरासो जातस्य श्री नित्य सदाशिवात्मानन्दा नामधेयस्य मौद्गल्यसगोत्रोद्भवस्य चित्रा नक्षत्रे जातायाः मानित्य सदाशिवात्मानन्दानां याः पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रे जातायाः त्रिपुरानन्दभैरवीनां याः वीरेश्वर मनोहर नामधेयस्य नागसुशीलानां याः सकुटुम्बस्य नित्यानन्दगोत्रोद्भवायाः विशाखा नक्षत्रे ऋषिकरासो जातायाः मानित्य योगानन्दरूपिणीनां याः क्षलस आरोहानां याः जोश्वा नामधेयस्य मरीचानां याः जॉन नामधेयस्य एंटन नामधेयस्य मार्टिन नामधेयस्य डेनिस नामधेयस्य सकुटुम्बस्य भरणी नक्षत्रे मेषरासौ जातायाः मानित्य आत्मप्रेमाणां याः स्यज समीर सिकंदर नामधेयस्य स्यज शायान शाह नामधेयस्य आषाढ़ नक्षत्रे पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे धनुषरासौ जातस्य स्यज शायान शाह नामधेयस्य विमला नंबियार नाम याः सुरेंद्रनाथ नंबियार नामधेयस्य सकुटुम्बस्य सिंहरासौ जातस्य मौर्या तलवार नामधेयस्य मिली तलवार नाम याः मनोज तलवार नामधेयस्य सकुटुम्बस्य वाई फैन यू नाम याः nga वुंचान नाम याः युवन क्वेंग यू नामधेयस्य किन मुई वांग नाम याः वाई क्वान यू नाम याः मैन चुंग यू नामधेयस्य मैन का यो नामधेयस्य सकुटुम्बस्य नित्यानन्दगोत्रोद्भवस्य तिरुवादिरै नक्षत्रे मिथुनरासौ जातस्य श्रीनित्य सदाशिवमयानन्दानामधेयस्य अनुषाढा नक्षत्रे ऋषिकरासौ जातायाः मानित्य सदाशिवमयानन्दानां याः मूला नक्षत्रे धनुषरासौ जातायाः
वसुमतीनां याः त्रिवोणं नक्षत्रे जातस्य देशिकन् राजगोपालचारी नामधेयस्य सकुटुम्बस्य लियोंग इयोक टेंग नाम याः लियोंग सैम किट नामधेयस्य वांग इम ओई नाम याः लियोंग फाइसन नामधेयस्य सकुटुम्बस्य पेट्रिशिया वेम्बूरी नाम याः बेटी ऑसबोर्न नाम याः पेट्रिशिया नेस्मिथ नाम याः डॉन वेम्बूरी नामधेयस्य डॉन लैटमन नामधेयस्य ब्रायन ऑसबोर्न नामधेयस्य बेबोना लिविंगस्टन नाम याः सकुटुम्बस्य नित्यानन्दगोत्रोद्भवायाः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे जातायाः मा नित्यदुर्जति नित्यानन्दानां याः सकुटुम्बस्य ली क्वान नाम याः ली आई नाम याः झाओ ज़ियाओ यू नाम याः ली ज़ुआनजू नामधेयस्य ली चाओयांग नामधेयस्य सकुटुम्बस्य जे इसूरी नामधेयस्य शिवाजी इसूरी नामधेयस्य मार्गोट लेसेरे नाम याः ट्रबल सी स्केंदर ट्रबल सी सबरी नामधेयस्य सकुटुम्बस्य जैसे पेडिल्ला नाम मधेयस्य लूशिया समनो नाम याः नचली समनो नाम याः सोफिया लोपेज नाम याः एली पेडिल्ला नामधेयस्य एमा पेडिल्ला नाम याः सकुटुम्बस्य जूडी रामश्रय नाम याः सुमित्रा नाम याः विजय रामश्रय नामधेयस्य रायन रामश्रय नामधेयस्य नील रामश्रय नामधेयस्य कृष्णा सहाय नामधेयस्य डॉली सहाय नाम याः सकुटुम्बस्य माँ आनंद शक्ति नाम याः यांग शेंगलियांग नाम याः चॉय कॉक हांग नामधेयस्य हुआ जिनयुआन नामधेयस्य सकुटुम्बस्य जू वेइपिंग नाम याः फेंग जू बिन नामधेयस्य फेंग वेन हुई नाम याः फेंग जू काय नामधेयस्य ली शोयिंग नाम याः सकुटुम्बस्य स्वी लेंग नित्यशांत योगमयी नाम याः चैन कॉक्शियांग नामधेयस्य चैन गुआनसियू नाम याः चैन गुआनसियान नामधेयस्य चैन गुआनी नाम याः सकुटुम्बस्य नित्यानन्दगोत्रोद्भवस्य मीनाक्षी नाम याः सकुटुम्बस्य शतभिषा नक्षत्रे जातस्य शतभिषा नक्षत्रे कुंभरासौ जातस्य आशिक्पायि नामधेयस्य कौशिकगोत्रोद्भवायाः विशाखा नक्षत्रे तुलारासौ जातायाः चैतलीपायि नाम याः रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायाः अद्वीपायि नाम याः रोहिणी नक्षत्रे ऋषभरासौ जातायाः आन्वीपायि नाम याः सकुटुम्बस्य वू हुई नाम याः वांग रेनबाओ नामधेयस्य वांग यीजिया नाम याः वू बिन नामधेयस्य वू जुन नामधेयस्य सकुटुम्बस्य शिवगोत्रोद्भवस्य कटकरासौ जातायाः मीरा राजरत्नं नाम याः उत्तरादिनक्षत्रे जातस्य गणेश्वरन राजरत्नं नामधेयस्य तिरुवोणं नक्षत्रे जातस्य आत्मं राजरत्नं नामधेयस्य मघा नक्षत्रे जातायाः मणिमेखले त्यागराज नाम याः सकुटुम्बस्य एर ज्योतियांग नामधेयस्य ली मोनशॉय नामधेयस्य इंग योक आय नाम याः ली लाइमिंग नाम याः ली लाइयी नाम याः ली लाइचिंग नाम याः ली लाइसम नाम याः ली लाइक्वान नाम याः सकुटुम्बस्य चांग चेंगोंग नामधेयस्य चांग जियालिन नामधेयस्य चांग जियायू नामधेयस्य चेन शू
chen su chu nam jaha, chen yu rong nam jaha, chen su cheng nam jaha, sakudumbasya pa chi chang namधेयस्य कनोसा लिu mei wan nam jaha, pa yenji nam jaha, pa loki nam jaha, pa gongi nam jaha, pa junyi श्री परमशिवलिंगम नामधेयस्य क्वा युक चुन नाम जाहा, लिu mei फुंग नाम जाहा, लिवी छिन्वा नाम मधेयस्य सकुटुम्बस्य वेई हुआंग नाम याहा, वेई क्योंग लाओ नाम याहा, ग्जिन टोंगलिन नामधेयस्य जी यू नाम याहा, जू जिंग जैंग नाम मधेयस्य यी मिंगलिन नामधेयस्य सकुटुम्बस्य कश्यपगोत्रोद्भवायाः आर्द्रा नक्षत्रे जातायाः शरी पिंगाव नाम याहा, महानक्षत्रे सिंहरासो जातस्य यू मिंगाव नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातायाः वेंज्वांशी नाम याहा, सकुटुम्बस्य शिवगोत्रोद्भवस्य उत्तरादं नक्षत्रे मकररासो जातस्य कलैसेल्वन्नामधेयस्य उत्तरादिनक्षत्रे मीनरासो जातायाः लक्ष्मी नाम याहा, मृगशीर्षा नक्षत्रे ऋषभरासो जातस्य वेट्रिसेल्वी नामधेयस्य उत्तरं नक्षत्रे कन्यारासो जातायाः पद्मा नाम याहा, सकुटुम्बस्य कुंभरासो जातायाः मीनाक्षी नाम याहा, सदैव नक्षत्रे कुंभरासो जातायाः मीनाक्षी नाम याहा, मृगशीर्षा नक्षत्रे ऋषभरासो जातस्य मुत्तय्या नामधेयस्य सकुटुम्बस्य सुवित सुरेन्द्रन श्रीनित्य अमृता पाणानंदा नामधेयस्य विमला सुरेन्द्रन नामधेयस्य रिंको वलेचा नामधेयस्य नंदिका सुविड नाम याहा, ध्रुव सुविड नामधेयस्य सकुटुम्बस्य सुयिन याम नाम याहा, कियान लॉन्ग वांग नामधेयस्य क्लो ली रोंग चेन नाम याहा, सकुटुम्बस्य स्वर्णिमा सिंह नाम याहा, आनंद शर्मा नामधेयस्य निलय शर्मा नामधेयस्य शोभना शर्मा नाम याहा, पूरन सिंह नामधेयस्य रजत कुमार सिंह नामधेयस्य खद्री निधि सिंह नाम याहा, सकुटुम्बस्य शिवगोत्रोद्भवस्य भरणी नक्षत्रे मेषरासो जातस्य लिंगेश्वरन नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे ऋषभरासो जातायाः विजयन्तिमलर नाम याहा, आर्द्रा नक्षत्रे मिथुनरासो जातस्य गौरीश्वरन नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे जातस्य सुकमणीयं नामधेयस्य आविट्टं नक्षत्रे कुंभरासो जातायाः कामिनी नाम याहा, सदयं नक्षत्रे कुंभरासो जातायाः सुभाषिनी नाम याहा, सदाशिवं नामधेयस्य परमेश्वरी नाम याहा, सकुटुम्बस्य मूलं नक्षत्रे धनुसरासो जातायाः पार्वती नाम याहा, चित्रा नक्षत्रे कन्यारासो जातस्य रविचन्द्रन एंड्रू नामधेयस्य सुकुमणीयं नामधेयस्य कालियम्मा नाम याहा, कामिनी नाम याहा, शिवगामी नाम याहा, काला नामधेयस्य सकुटुम्बस्य गोलगोत्रोद्भवस्य विशाखा नक्षत्रे तुलारासो जातस्य राजीव गोयल नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषरासो जातायाः सोनल गोयल नाम याहा, आर्द्रा नक्षत्रे मिथुनरासो जातस्य वेदांत गोयल नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषरासो जातस्य श्लोक गोयल नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे शुभरासो जातायाः गर्गगोत्रोद्भवायाः कृषा नाम याहा, शुभ नक्षत्रे ऋषभरासो जातस्य श्याम बिहारी गोयल नामधेयस्य शुभ नक्षत्रे कटकरासो जातायाः रानी बाला गोयल नाम याहा, सकुटुम्बस्य आर्द्रा नक्षत्रे जातस्य कैरीन
शिवनाथराजन् नामधेयस्य सकुटुम्बस्य मानित्य महाजनानंदा विंग यिनली नाम याह क्वांग फैंग वांग नाम याह गुओ हुआली नाम तेजस्या यिंग क्वेली नाम याह यान फेनली नाम याह गुओ क्वांगली नाम तेजस्या चाय सकुटुम्बस्य चाय कुन नाम तेजस्या चाय लियान ही नाम मधेजस्या यान फेंगिंग नाम याह जांग मिंग नाम याह मिन मिनगु नाम याह केन ली नाम तेजस्या सकुटुम्बस्य मिन मिनगु नाम याह केन ली नाम तेजस्या लिंग ली नाम याह जाय चुन हुआंग नाम तेजस्या कोरी नाम याह ग्व्याओ ग्व्याओ नाम तेजस्या सकुटुम्बस्य ली जुवे नाम याह क्वी जिनहाव नाम तेजस्या लू जिनजुवे नाम याह लू चैंग जियोंग नाम तेजस्या क्वी क्वाओ मे नाम याह क्वी हुआक्सिंग नाम तेजस्या क्वी जिनलियान नाम याह क्वी केफा नाम तेजस्या क्वी क्वाए हुई नाम याह सकुटुम्बस्य सुवात लीटान नाम याह स्वीट लियोंग टांग नाम मधेयस्या याक्सियांग नाम याह स्वाद बिंटान नाम याह स्वाद हुआटान नाम याह स्वाद टेंगटान नाम याह स्वाद नियोटान नाम याह शेर कुंटान नाम मधेयस्या जी यीटान नाम मधेयस्या सकुटुम्बस्य मानित्य विद्यामयी यान यांग यान बिन नाम याह श्री ज्यू डी नाम तेजस्या श्री आनंद ज्यू ग्जुन नाम तेजस्या जू रुई पिंग नाम तेजस्या यांग होंगमिंग नाम तेजस्या फैन फेंगजियन नाम याह सकुटुम्बस्य नित्य स्वतंत्रा नाम याह रुई फेयांग नाम याह बेई बेई झो नाम याह जाओ जाओ लिन झो नाम तेजस्या जिन याओ झेंग नाम तेजस्या जिन शी झेंग नाम मधेयस्या सकुटुम्बस्य हु हुआन नाम याह ली मेंग नाम तेजस्या ली लिन्नान नाम तेजस्या झेंग जिया हुआ नाम याह हु ली पिंग नाम तेजस्या हु लांग नाम तेजस्या सकुटुम्बस्य चान टाई क्वाक विंग नाम याह चान वाई ची अंजला नाम याह चाई चान का फै अल्बर्ट नाम तेजस्या चान का चुन आलन नाम तेजस्या चान का पोंग एंड्रू नाम तेजस्या सकुटुम्बस्य डिंग जी नाम याह यू क्वाओ जी नाम तेजस्या यू बिंग नाम तेजस्या सकुटुम्बस्य स्वात लीचान नाम याह स्वीट लियोंग टांग नाम तेजस्या याक्सियान नाम याह स्वात बिंटान नाम याह स्वात हुआटान नाम याह स्वात टेंगटान नाम याह स्वात नियोटान नाम याह सर कुंटान नाम तेजस्या जी यीटान नाम तेजस्या सकुटुम्बस्य चोन्ये लियो नाम याह याइक लियो नाम याह चीरन लियो नाम तेजस्या रुई पिंगकोंग नाम याह बिंग जियान जू नाम तेजस्या युवान क्वांग नाम तेजस्या सकुटुम्बस्य शेन येन वन नाम याह जबल शेन नाम याह जॉन लो नाम तेजस्या शेन जियासन नाम तेजस्या चेंग पाई हुंग नाम याह चेन येनबो नाम तेजस्या सकुटुम्बस्य नित्यानंद गोत्रोद्भवस्य शांतरथा स्मुत्तस्वामी नामधेयस्य तिरुवादिरे नक्षत्रे मिथुनरासौ जातस्य संतरदस्मुत्तस्वामी नामधेयस्य मघानक्षत्रे सिंहरासौ जातायाः राजेश्वरी रमणेय नाम याः आविट्टम नक्षत्रे मकररासौ जातस्य कृष्णराज नामधेयस्य
जगलो अप्पळस्वामी नामधेयस्य राजो रमणेया नामधेयस्य सरोजा रमणेया नामजाः वरलक्ष्मी नामजाः बालसुब्रह्मण्यं नामधेयस्य बालकृष्णं नामधेयस्य सकुटुम्बस्य ज़्याओ ज़ियाओनिंग नामधेयस्य यिन लेंगजिंग नामजाः ज़ो यूरू नामजाः लियू क्यूवी हुआ नामजाः ज़ो विंगचिंग नामधेयस्य सकुटुम्बस्य चांटे फील्स नामजाः सकुटुम्बस्य ची उंगलिन चेन नामधेयस्य चेंग एंगयांग नामधेयस्य शु हुई चेन नामधेयस्य मे वेनलिन नामधेयस्य लिन जिन लिंग जेन चेन नामधेयस्य हिंग चिंग हु हंग यांग नामधेयस्य सकुटुम्बस्य चेंग न्यांगिंग नामधेयस्य सकुटुम्बस्य याओ चीबू नामधेयस्य चिंग चुवीबू नामधेयस्य चुंग हीबू नामधेयस्य यू सेनबू नामजाः हान चीबू नामधेयस्य सकुटुम्बस्य लिम बीलाय नामजाः ज्ञान पेशे नाम जे नामजाः ज्ञान पेजू नामजाः टान सामजी नामजाः टान म्यूयी नामजाः ज्ञान चिन्याप नामधेयस्य टान सुंग मेंग नामधेयस्य ज्ञान शांस्यांग नामधेयस्य सकुटुम्बस्य चान शान यिक नामधेयस्य चान यिक अन नामधेयस्य चान यून मुन नामधेयस्य टान यून क्योंग नामधेयस्य इंग क्यून नामजाः सकुटुम्बस्य सेसिलिया लाम नामजाः स्यू जिंगलियू नामजाः ग्लोरिया लीलियन लाम नामजाः स्टीवन एलेक्स लाम नामधेयस्य क्लो लाम नामजाः मरीजा लियोंग नामजाः सकुटुम्बस्य लियाओ क्वी कोंग नामधेयस्य लियाओ शेंगज़ाओ नामजाः लियाओ शू हुई नामजाः लियाओ होंगजुन नामधेयस्य लियाओ होंगू नामधेयस्य लियाओ फेंगची नामजाः सकुटुम्बस्य लियू मु सेन नामधेयस्य लू होंगजी नामधेयस्य लाई शूफैंग नामजाः लू मुहुआन नामधेयस्य लू चेंग एन नामजाः लू वी चेन नामधेयस्य सकुटुम्बस्य हिल्जे गेरट नामधेयस्य सकुटुम्बस्य नित्यानंद गोत्रोद्भवस्य पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रे जातस्य कार्तिक नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे जातायाः महादेव रूपानामजाः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे जातायाः मा नित्यकालकालानन्दानामजाः सकुटुम्बस्य रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातस्य रोहित विश्वनाथ नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे कटकरासौ जातायाः प्रियंका आर्के नामजाः अश्विनी नक्षत्रे मेषरासौ जातस्य अर्णा रोहित नामजाः चित्रा नक्षत्रे कन्यारासौ जातायाः पद्मा एस नामजाः आश्लेषा नक्षत्रे कटकरासौ जातस्य के एन राममूर्ति नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे कन्यारासौ जातायाः के आर जयशीला नामजाः सकुटुम्बस्य चो लियांशिया नामधेयस्य जियान स्वान नामजाः शो एसन नामधेयस्य शेन हुईयांग युवान नामजाः शो स्यांग छिन नामजाः सकुटुम्बस्य सुनील नामधेयस्य मिला नामजाः सियानी नामजाः इंगा नामजाः गीता नामजाः राजीव नामधेयस्य जाकी नामधेयस्य ट्याना नामजाः रोथ नामजाः जॉर्जिया नामजाः सकुटुम्बस्य बल्ललार गोत्रोद्भवस्य रोहिणी नक्षत्रे ऋषभरासौ जातस्य विद्याकरण नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे ऋचिकरासौ जातायाः वसन्ता नामजाः
महानक्षत्रे सिंहरासौ जातायाः पवित्रासायिनां याः विशाखा नक्षत्रे तुलारासौ जातायाः सारङ्कानां याः उत्तराद्रं नक्षत्रे मकररासौ जातायाः शाम्भवीनां याः आविट्टं नक्षत्रे कुम्भरासौ जातायाः कमलां मानां याः सकुटुम्बस्य मर्टीना ड्रगोजानां याः एन्थिया ड्रगोजानां याः रॉडरिच ड्रगोजा नामधेयस्य फ्रैंक ऑचर्सबर्ग नामधेयस्य रेने ड्रगोजानां याः जुबो ड्रगोजा नामधेयस्य थॉर्स्टन क्लासन नामधेयस्य इना जिर्नेट नामधेयनां याः जुलिना क्लासन नाम याः जनेस क्लासन नामधेयस्य सकुटुम्बस्य सकुटुम्बस्य च श्री कैलासोन्नत द्वादशांत श्यामला पीठारूढ़ श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वराभिन्न स्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपान लब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागमसार भूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत् परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्र चामर श्री चिन्ह काहलादि समस्त बिरदावल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संग सद्यो निर्वाण दीक्षा व्यजाप वर्ग वर्ष विश्राणजीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु क्षपन शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणा नरहार ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीम ऋषभध्वज स्थापक शैव समय कर्त्रे सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिना अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ तृणवद्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रजित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्त्रे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणि साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणी पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्ग पुरस्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रीलश्री भगवत श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थम तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थम गुरुकृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध बल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम समस्त दुरितोपशांत्यर्थम समस्त मंगल अवाप्त्यर्थम भगवत श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थम श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अवतार भूत श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत श्री नित्यानंद परमशिव प्रत्यक्ष पाद पूजां करिष्ये ओम उपस्पृश्य next we will be entering into the ghantanada, which is ringing of the bell. As per the Agama Shastras, when we ring the bell,
we invoke the presence of the devatas and we remove the negative energies of the Rakshasas from the space where we are performing the puja. So let us perform the Ghantanada now. Take the bell in your left hand, hold it above your heart center and ring the bell as we chant the following mantra. Om Agamarthantu Devanam Gamanarthantu Rakshasam Ghantanadam Karom Yadu Devata Kvanalanchanam Ghanta Devatabhyo Namaha. Next, we will be entering into the Manasa Puja, which is the internal worship. The meaning of the mantra we are going to chant now is, what seed can I offer to the Master except my heart? I offer the gratitude flowing as nectar to wash his feet and to rinse his mouth. I offer my mind itself as the arghya, the traditional bouquet. To my Master, who is the very cosmos, what clothing can I offer except the space? I offer my very prana, the life energy, as the incense, and I offer the ocean of nectar as the food offering. The principle of the unstuck perennial sound is to be offered as the bell, the air as the chamara, and the sahasrara as the umbrella. The principle of sound as the music, the actions of the senses, and also the vagaries of the mind as the dance. All the 7 chakras along the Sushumna Nadi is to be offered as a flower garland. The different kinds of flowers with which the Supreme Pontiff of Hinduism should be worshipped are the guilelessness, freedom from ego, freedom from suffering when your desires are not fulfilled, freedom from arrogance, freedom from ignorance, freedom from deceit, freedom from hatred, freedom from agitation, freedom from jealousy and greed. And the Supreme Pontiff of Hinduism should also be worshipped with the flowers of non-violence, mastery over the senses, compassion, forgiveness, and ultimately the enlightenment itself. Now, please take a few flowers in your hands, place your hands in the Kurma Mudra, close your eyes and offer the flowers at Swamiji's feet by the end of the mantra. Om Hritpadmamasanam Dadyat Sahasrarachyutamritaihi Padyam Charanayor Dadyat Manastu Arghyam Nivedajet Tena Amritena Achamanijam Snanijam Tena Chasmritam Akashadattvam Vastram Syat Gandhasyat Gandhatatvagam Chittam Prakalpajet Pushpam Dhupam Pranan Prakalpajet Tejastatvancha Deepartham Naivedyam Syat Sudham Buddhihi Anahatadvanirghanta Vayutatvam cha chamaram Sahasraram bhave chhatram Shabdatatvam cha geetakam Nrittamindriya karmani Chanchalyam manasastatha Sumekhalam padmamalam Pushpam nana vidham tatha Amayadyair bhava pushpaihi Archayed bhava gocharam Amayam manahankaram Aragam mamadam tatha Amohakam madam pancha Advesha akshobhagau tatha Amatsaryam malobhancha Dashapushpam vidurbudhaha Ahimsa paramam pushpam Pushpam indriya nigraha Daya pushpam kshama pushpam Jnana pushpancha panchamam Idi panchadasher Bhava pushpaihi Sampujayet Bhagavantam Sri Nityananda Paramashivham. Next, we'll be entering into the Upachara Puja, which is the external worship.
The first is the offering of asana, the offering of the seat. The meaning of the mantra we are going to chant now is the one who resides inside all the beings, the one who is the very soul of all the beings. I offer the seat to you. I surrender, I surrender. Now, please take the asanam, the seat in your hands and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Asanam Om Sarvabhutantarasthaya Sarvabhutantaratmane Kalpayamyupaveshartham Asanam Te Namo Namaha. Om Hrim Idam Suvarnasanam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Namaha. Next is the offering of Swagatam, the offering of welcoming the Master. The meaning of the mantra we are going to chant now is, O the Lord of all gods, O the one whose darshan is awaited by the gods for the fulfillment of their desires. Welcome, welcome. Today, my birth, life and all deeds are fructified. The fruits of all my tapas is materialized just by welcoming you. Now, please take some flowers in your hands and offer the flowers at Swamiji's feet by the end of the mantra. Swagatam Om Shantatvat Sarvakartritva Bhavo Paratikaranat Shiva Uktau Mahatantra Mantra Vidbhis Sada Shivaha Tasmai Shivaya Gurave Vitaragakalaaya Vai Ameyatvatanantoyam Ajatvacha Prakirtitaha Yasya Darshanamichanti Deva Swabhishta Siddhaye Tasmai Tve Parameshana Swagatam Swagatam Prabho Adya Me Saphalam Janma Jivanam Saphala Kriyaha Swagatam Yatvaya Tanme Tapasam Phalamagatam. Om Hrim Sarvadeva Devi Swarupam Bhagavan Sri Nityananda Paramashivham Swagatam Saswagatam Te. Next is the offering of Padyam, the offering of water for washing Swamiji's feet. Now, please take a cup of water in your hands and offer at Swamiji's feet by the end of the mantra. The meaning of the mantra we are going to chant now is, I offer the Padyam, that is the water, for washing the feet of the Supreme God, the very devotion on whom brings about the ultimate bliss, the Paramananda. Now please take the cup of water in your hands and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Padyam Om Yad Bhaktilesha Samparkat Paramananda Samplavaha Tasmai Te Parameshana Padyam Shuddhaya Kalpaye. Om Hrim Etat Padyam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Namaha. Next is the offering of Arghya, the offering of the traditional bouquet. The meaning of the mantra we are going to chant now is, O Maheshwara, please accept this Arghya, the offering of the traditional bouquet with the water to welcome the guest, made of the durva grass, a flower and a bilva leaf, and a rice pellet, kept in a beautiful conch. Now please take the Arghya in your hands and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Arghya Om Durvakshata Samayuktam Bilvapatram Tathavaram Shobhanam Shankhapatrastham Grahana Arghyam Maheshwara. Om Hrim Esho Arghya Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Swaha. Next is the offering of Achamaniyam, the offering of water for mouthwash. The meaning of the mantra which you are going to chant now is, please accept this auspicious and sin-removing Ganga water offered by me as Achamaniyam, that is the water for the mouthwash, offered by me with devotion to you. Now, please take the cup of water in your hands and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra.
आचमनीयम् ॐ मन्दाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभं ग्रहाणाचमनीयं त्वं मया भक्त्या निवेदितम् ॐ ह्रीं इदम् आचमनीयोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय स्वधा. Next is the offering of Madhuparka, the offering of the nectarine drink. The meaning we are going to chant now is, for the destruction of all the negativities, I offer this Madhuparka, this drink which is full of nectar. Please be pleased towards me, O Lord. Now please take the Madhuparka in your hands and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Madhuparkaha Om Sarvakalmashanashaya Paripurna Sudhatmakam Madhuparkamimam Deva Kalpayami Prasidame. Om Hrim Esha Madhuparkaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Svadha. Next is the offering of Gandhatailam, the offering of the scented oil. The meaning of the mantra we are going to chant now is, I offer with love and affection this scented oil to you, O the healer of all the worlds. You are the purest among all the worlds. Now, please take the Gandhatailam in your hands and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Gandhatailam Om Sneham Grahana Snehena Lokanam Hitakaraka Sarvalokeshu Shuddhastvam Dadami Snehamuttamam. Om Hrim Idam Gandhatailam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Nivedayami. Next is the offering of Snaniyam, the offering of water for the sacred bath. The meaning of the mantra we are going to chant now is, please accept this cool, pure and clear water which is capable of seizing my mind, for your sacred bath offered by me with devotion unto you. Now please take a cup of water in your hands and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra, and please ring the bell as you do so. Snaniyam Om Idam Sushitalam Vari Swachham Shuddham Manoharam Snanartham Te Maya Bhaktya Kalpitam Pratigrihyata. Om Hrim Idam Snaniyodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Nivedayami. Next is the offering of Vastram, the offering of the sacred clothes. The meaning of the mantra we are going to chant now is, I offer the Vastram, the cloth offering, to the Master who removes the veil of Maya or illusion. The Master, who is the true light of enlightenment, who does not have a veil of Maya and has the very space as his dress. Now, take the offering of clothes, the Vastram, in your hands and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Vastram Om Maya Chitrapata Channa Nijaguhyoru Tejase Niravarana Vijnaya Vasaste Kalpayamyaham. Om Hrim Idam Vastrottarijam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Nivedayami. Next is the offering of Abharanam, the offering of the sacred jewelry. The meaning of the mantra we are going to chant now is, I offer
this golden ornament to you, Master, by who, by very nature, has a very gracefully beautiful body, and who is the repository of all the powers. May you be pleased. Now please take the jewelry in your hands and offer it at Swamiji's feet along with the mantra. Abharanam Om Swabhava Sundarangaya Nana Shaktyashrayayate Suvarnam Bhushanam Tubhyam Kalpayami Prasidame Om Hrim Idam Suvarnabharanam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Nivedayami. Next is the offering of Gandha, the offering of the sandalwood paste. The meaning of the mantra we are going to chant now is, I neither know what your body is, nor do I know what your actions are. Please accept and smear this sandalwood paste offered by me. Now please take the sandalwood paste in your hands and offer it at Swamiji's feet along with the mantra. Gandha Om Shariram te na janami cheshtam naiva cha maya niveditan gandhan pratigrihya vilipyatam Om Hrim Esha Gandha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Namaha. Next is the offering of Pushpam, the offering of the fragrant flowers. The meaning of the mantra we are going to chant now is, please accept these blissfully fragrant different kinds of flowers which are taken from the forest of Turiya, that is the state and space of the ultimate restful awareness. Now, please take a few flowers, smeared with sandalwood paste in your hands, and offer the flowers at Swamiji's feet along with the mantra. Pushpam Om Turiyavana Sampannam Nana Gunamanoharam Ananda Saurabham Pushpam Grihyatam Idamuttamam Om Hrim Etanim Sachandana Pushpani Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Vaushate. Next is the offering of Bilva Patram, the offering of the Bilva leaves. The meaning of the mantra we are going to chant now is, I offer you, O God of all the gods, this holy Bilva leaf in which dwells the goddess of richness, Mahalakshmi, and which is so much loved by Paramashiva. Now, please take the Bilva leaf smeared with sandalwood paste in your hands and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Bilva Patram Om Amritodbhavam Shri Vriksham Shankarasya Sada Priyam Bilva Patram Prajachami Pavitram Te Sureshwara Om Hrim Etani Sachandana Bilva Patrani Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Vaushate. Next is the offering of the Tulasi Patram, the offering of the Tulasi leaves. The meaning of the mantra we are going to chant now is, let this offering of Tulsi leaf be unto the Supreme Soul, the Paramatma, who has unlimited forms and who is the bestower of all the boons, who is the Varada Murti. Now, please take the Tulasi leaf smeared with sandalwood paste in your hands and offer it at Swamiji's feet along with the mantra. Tulasi Patram Om Namaste Bahurupaya Varadamurtaye Paramatmane Swaha Om Hrim Idam Sachandana Tulasi Patram Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Namaha. Next is the offering of Dhupa, the offering of the lit incense sticks. The meaning of the mantra we are going to chant now is, this incense smoke made of the sacred herbs of intoxicating fragrance
Please accept this incense smoke fit to be inhaled by all the devas. Now, please take the lit incense sticks in your hands and slowly wave it towards Swamiji, along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Dhupah Om Vanaspatiraso Divyo Gandhadyassu Manoharaha Agreya Sarva Devanam Dhupoyam Pratigrihyataam Om Hrim Esha Dhupah Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Namaha. Next is the offering of Deepa, the offering of the lit lamp. The meaning of the mantra we are going to chant now is, please accept this light of inner and outer worlds, which is very bright and removes the darkness from everywhere. Now please take the lit lamp in your hands and slowly wave it towards Swamiji along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Deepaha Om Supragāsho Mahādīpaha Sarvatastimiراpaha Sabāhyābhyantarajyotirdeepoyam Pratigrihyataam Om Hrim Esha-Deepaha Sarvadeva-Devi Swaruvaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Namaha. Next is the offering of Naivedyam. The offering of food. The meaning of the mantra we are going to chant now is, these different kinds of food offerings are prepared from sweetener and other ingredients. O Lord, please accept this food offering prepared by me with devotion. Now, please take an uddarni of water in your hands, hover it clockwise over the Naivedyam and offer the uddarni of water at Swamiji's feet by the end of the mantra. And please ring the bell as you do so. Naivedyam Om Naivedyam Vividham Deva Sharkarati Vinirmitam Maya Niveditam Bhaktya Grihana Parameshwara Om Hrim Idam Shopakarana Naivedyam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Nivedayami. Next is the offering of Paniyam, the offering of water for drinking. Now, please take a cup of water in your hands and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. The meaning of the mantra we are going to chant now is, O God, the Lord of all demigods, the one who bestows deep fulfillment upon us, please accept this water full of infinite bliss. Now, please take the cup of water in your hands and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Panijam Om Samasta Deva Devesha Sarva Triptikaram Param Akhandananda Sampurnam Grahana Jalamuttamam Om Hrim Idam Panarthodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Namaha. Next is the offering of Punarachamaniyam, the offering of water for mouthwash. The meaning of the mantra we are going to chant now is, I offer this water for washing the hands and the mouth to you, whose mere remembrance purifies everybody. Now, take an uddarni of water. Take a cup of water in your hands and offer it at Swamiji's feet by the end of the mantra. Punarachamaniyam Om Uchishtamapya Shuchirva Yasya Smaranamatrataha Shuddhimapnoti Tasmai Te Punarachamanijakam Om Hrim Hidam Punarachamaniyodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Swaha. Next is the offering of Arartrikam, the offering of the lit Arati. The meaning of the mantra we are going to chant now is, we salute to Kubera, who blesses us with wealth,
who is the supreme of the kings, the one who possesses great patience. Let Lord Kameshwara, the Lord of desire energy, fulfill our desires. I offer my pranams, that is worship and salutations, to the one who is as pure as camphor, the one who has incarnated because of intense compassion and for the devotion of the devotees, the one who is the very essence of life, the one who has the king of serpents as his ornament, the one who lives eternally in the lotus of the heart, and the one who has both the Paramashiva's energy, that is the cosmic masculine energy, and Paramashiva Shakti's energy, that is the cosmic feminine energy at its peak. I offer my pranams to you. Let us celebrate the very moment when the heavens showered, when Paramashiva decided to assume the body, to descend onto the Bhumandala out of his intense compassion. Now, please take the lit arati in your hands and slowly wave it towards Swamiji along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Hrim Esha Deepamala Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nithyananda Paramashivaya Namaha. Om Sangrahanyeshtya Yajate Imam Janatagum Sangranhaniti Dvadasharatnirashana Bhavati Dvadashamasa Samvatsaraha Samvatsarameva Varundhe Maunji Bhavati Urgvai Munjaha Urjameva Varundhe Chitra Nakshatram Bhavati Chitram Va Etat Karma Om Rajadhirajaya Prasahya Sahine Namo Vayam Vai Shravanaya Kurmahe Same Kamanga Makamaya Mahyam Kameshwaro Vai Shravano Dadatu Kuberaya Vai Shravanaya Maharajaya Namaha Karpura Gauram Karunavataram Samsarasaram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hridayaravinде Bhavam Bhavani Sahitam Namami Bhavam Bhavani Sahitam Namami Bhavam Bhavani Sahitam Namami Arartrikam Samarpayami Bhagavat Sri Nithyananda Paramashiva Charana Kamalebhyo Namaha. Next is the offering of Pushpanjali, the offering of the fragrant flowers. Now, the meaning of the mantra that we are going to chant now is Guru is the Brahma, who is the source of creation of the universe. He is Vishnu, who is the source of sustenance of the universe. And he is Shiva, who is the source of rejuvenation of the universe. Guru is all the three put together in a single form. He is the Param Brahma, the ultimate. I surrender to that Guru. I surrender to the Guru who is omnipresent and also has given me a glimpse of his experience. I surrender to the Guru who has, with a brush of wisdom, opened my eyes blinded by the ignorance. I surrender to the Guru who, by giving the knowledge about the self, has burnt my karmic baggage of so many births. I surrender to the Guru who is the Lord of the cosmos, who is the Guru of the cosmos. My soul is the same soul which is in all the beings. I surrender to Dakshinamurti, the primal Guru who manifests himself differently in the forms of Ishvara, Guru and Atman, or the Self. I surrender to that Sadguru who is the eternal bliss, who is the bestower of supreme happiness, the one who is the embodiment of wisdom, who is beyond duality, who is omnipresent, to whom the supreme goal is giving the enlightenment experience, who is eternal, pure and unshakable, who is the silent spectator of all the thoughts, processes, who is beyond emotions, who is without the three qualities called Sattva, Rajas and Tamas. Now, please take a few flowers in your hands, close your eyes and offer the flowers at Swamiji's feet by the end of the mantra. Pushpanjalihi
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्तकर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव चरणकमलेभ्यो नमः। ओम नित्यानंदम। Now, we will be chanting the Sankalpa for the participants who have offered the Guru Dakshina as a part of today's Pratyaksha Pada Puja. Please clasp your hands, place them on your right thigh in the Sankalpa Mudra. Please be seated with the head, neck and spine in a straight line. Om Mamo Pata Samasta Duridakshaya Dwara भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रीत्यर्थम श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव प्रीत्यर्थम च अद्य पूर्वोक्त एवं गुण विशेषेण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अप्रैल में के सिख नाम याः कर्मे में के नाम याः सकुटुंबस्य उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रे मीनरासु जातायाः सेसिली हृदयं नाम याः वृश्चिक रासौ जातस्य विजय कुमार तंबिमुत्त नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे तुलारासौ जातायाः रूपेश तंबिमुत्त विजय कुमार नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे तुलारासौ जातायाः ऋष्का लक्ष्मी विजय कुमार नाम याः चित्रा नक्षत्रे तुलारासौ जातायाः रीता हृदयं नाम याः सकुटुंबस्य उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे जातायाः माँ एकपाद शक्तिनी नाम याः मृगशीर्षा नक्षत्रे जातस्य डैनियल वर्गस नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातायाः मयस वर्गस नाम याः रोड्रिगो वर्गस नामधेयस्य डिलीशिया वर्गस नाम याः सकुटुंबस्य नित्यानंद गोत्रोद्भवायाः पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे जातायाः क्रिस्टीना रियग नाम याः सकुटुंबस्य सोनिया मुरालेस अनुराधा नक्षत्रे जातायाः सोनिया मुरालेस नाम याः रोहिणी नक्षत्रे जातस्य सर्जियो मुरालेस नामधेयस्य
रेवती नक्षत्रे जातायाः जोसेफिना मोरलेस् नाम्याः चित्रा नक्षत्रे जातस्य मिग्वेल् मोरलेस् नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य मोसिस् मोरलेस् नामधेयस्य सकुटुम्बस्य चेङ् मीची नामधेयस्य सकुटुम्बस्य जुवान् करोल्स् ओक्वा नामधेयस्य अना रोजा आर्सिनिएगा नाम्याः जुवान् करोल्स् ओक्वा अर्गेना नामधेयस्य डिएगो ओक्वा अर्किनिएगा नामधेयस्य अना मबेल् ओक्वा आर्सिनिएगा नाम्याः अना मिरियम ओक्वा आर्सिनिएजा नाम्याः सकुटुम्बस्य हिल्जा मुरिलो नाम्याः गोन्सालो नवरो नामधेयस्य गैब्रियल नवरो नामधेयस्य वायलचा नवरो नाम्याः इसबेला नवरो नाम्याः सकुटुम्बस्य जुवानिता कब्रेरा नाम्याः जुवान कब्रेरा नामधेयस्य अबिगेल कब्रेरा नाम्याः जिसी कब्रेरा नामधेयस्य जोनाथन कब्रेरा नामधेयस्य सकुटुम्बस्य रोसिटात् सांग नाम्याः सकुटुम्बस्य जुवानिटो कब्रेरा नामधेयस्य मार्गरीटा कब्रेरा नाम्याः नाटली कब्रेरा नाम्याः एमिली कब्रेरा नाम्याः केली कब्रेरा नाम्याः स्कारलेट कब्रेरा नाम्याः सकुटुम्बस्य सामुएल वास्क्वेज नामधेयस्य रूबेन वास्क्वेज नामधेयस्य पेट्रिशिया वास्क्वेज नाम्याः सामुएल वास्क्वेज नामधेयस्य सकुटुम्बस्य जेन शुयुन नाम्याः ही वेनलोंग नामधेयस्य हु यूशेन ही नामधेयस्य लुओ लान्यिंग नाम्याः जेन लिंग्वी नामधेयस्य जेन यूपिंग नाम्याः सकुटुम्बस्य परमेश्वरी प्रिया लियान फुंग लियोंग नाम्याः सकुटुम्बस्य सु शूचेन नाम्याः सु हीटाओ नामधेयस्य सु चुंगलिन नामधेयस्य सु वीजी नाम्याः सु यांग पापक्वे नाम्याः सुफेन नाम्याः सकुटुम्बस्य ग्याओ नानजिंग नाम्याः हुईली नाम्याः ग्यो क्वांगजिंग नामधेयस्य मिंग वेली नामधेयस्य वेन युवेकाओ नाम्याः ग्वी यांग नामधेयस्य गोल्डी नामधेयस्य कोको नामधेयस्य लक्ष्मी नाम्याः रोमेल मलबनन नामधेयस्य सकुटुम्बस्य वेरोन स्क्वीजर नामधेयस्य डिएगो स्क्वीजर नामधेयस्य विली स्क्वीजर नामधेयस्य मार्को जियांग ग्रेको नामधेयस्य मोनिक फोन्टेन नाम्याः क्रिस्टीन बियर्ड नाम्याः जैकस फोन्टेन नामधेयस्य कैरोलिन जैकोब नाम्याः सकुटुम्बस्य मानित्य परिच्छेद्यानंदा नाम्याः राशेल चाओ नाम्याः काशी चाओ नामधेयस्य तांसी गैन नाम्याः मरमलेद गैन नाम्याः जिंजर गैन नाम्याः कलिस्टा गैन नाम्याः काली गैन नाम्याः ग्रेगोरी गैन नामधेयस्य टिगार गैन नामधेयस्य नंदी गैन नामधेयस्य बैम्बी नाम्याः शक्ति नाम्याः सकुटुम्बस्य मा अच्युतमयानंदान आर्द्रा नक्षत्रे मितनरासो जातायाः मानित्य अच्युतमयानंदानाम्याः सकुटुम्बस्य जीना नेल्होम फेमे नाम्याः एक्सेल ऑर्वेन नेल्होम होम नामधेयस्य विक्टर ड्रैकन होम नामधेयस्य यान डॉलिन होम नाम्याः सकुटुम्बस्य मानित्य वेंकटेशानंदानाम्याः मेस्युमो मेट्यूसी नामधेयस्य एलियट मेट्यूसी नामधेयस्य जो मेट्यूसी नाम्याः क्रिस मैवरेली नामधेयस्य सकुटुम्बस्य नित्य स्वतंत्रानाम्याः रुई फेयांग नाम्याः म्याओ बो चेन नाम्याः झाओ लिंझाओ नामधेयस्य
नित्य स्वतंत्रानां याः रुई फेंग्यांगनां याः माइबो चेन्नां याः जाओलिन जाओ नामधेयस्य ग्जिन जी शेंग नामधेयस्य ग्जाओ लिंग शेंग नाम याः सकुटुम्बस्य आश्लेषा नक्षत्रे कटकरासौ जातायाः अंजलिका बेन्युलस नाम याः आर्द्रा नक्षत्रे मिथुनरासौ जातस्य रोसलिन वल्चर नाम याः पुष्या नक्षत्रे कटकरासौ जातस्य फ्रांसिस्को बेन्युलस नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे धनुषरासौ जातायाः यान यान बेन्युलस नाम याः मृगशीर्षा नक्षत्रे मिथुनरासौ जातायाः शेरोन बेन्युलस नाम याः रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातस्य अलेजेंड्रो बेन्युलस नामधेयस्य मघा नक्षत्रे सिंहरासौ जातस्य जस्टिन बेनुलोस नामधेयस्य सकुटुम्बस्य कार्ला टबेट नाम याः सकुटुम्बस्य सैंडी हेन्स नाम याः सकुटुम्बस्य टॉमी मैके नामधेयस्य सकुटुम्बस्य डैश ज्योत्सिक नामधेयस्य सकुटुम्बस्य एप्रिल मैके ज्योत्सिक नाम याः सकुटुम्बस्य रजिलो मार्क्स नाम मधेयस्य एमिली मार्क्स नाम याः मार्सेला बोलानोस नाम याः नामधेयस्य एडी मार्क्स नामधेयस्य सकुटुम्बस्य लुइस लोरी मानित्य योग ज्ञानानंदा नाम याः हार्मोनी तत्पुरुष शिवशक्ति नाम याः मा ज्ञान स्वरूपिणी नाम याः एस्थर तत्पुरुष शिवशक्ति नाम याः जीन डोंगमो सौबग्नि नाम मधेयस्य सकुटुम्बस्य गो मुइजोंग नाम याः कौस्यूफोंग नाम याः सकुटुम्बस्य मानित्य काम कोटिकानंदा नाम याः क्वियान ज्यूफेंग नाम याः लिन हौक्सिन नामधेयस्य यान जुयिन नाम याः वांग हुई क्विन नामधेयस्य वांग मेंग टैंग नाम याः सकुटुम्बस्य चेन चियन शेंग नामधेयस्य आन ली युए नाम याः लिया फेंगशी नाम याः चैन वेसुआ नाम याः झू वेनलोंग नामधेयस्य झू टैंगजन नामधेयस्य चेन यांजी नाम याः सकुटुम्बस्य शिवगोत्रोद्भवायाः रोहिणी नक्षत्रे ऋषभरासौ जातायाः मेखला नाम याः मूलं नक्षत्रे धनुषरासौ जातस्य रामलिंगम नामधेयस्य सकुटुम्बस्य मृगशीर्षा नक्षत्रे ऋषभरासौ जातायाः मानित्य कैलासप्रिया नाम याः सकुटुम्बस्य उत्तराषाढ़ नक्षत्रे मकररासौ जातस्य ज्ञानसुमा नामधेयस्य उत्तराषाढ़ नक्षत्रे मकररासौ जातस्य नरेश कुमार केशा नामधेयस्य सकुटुम्बस्य च मनसेप्सित सकल सद्भीष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं प्रत्यक्षपाद पूजाख्ये कर्मणि गुरुदक्षिणाम् अहं संप्रदते हरिः ओम तत्सत् सर्वं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव पादुकार्पणमस्तु ओम नित्यानंदम् नित्यानंद परमशिवोहम ओम नित्यानंद परमशिवोहम ओम नित्यानंद परमशिवोहम ओम नित्यानंद परमशिवोहम ओम नित्यानंद परमशिवो Nityanandam. With this, we conclude the Pratyaksha Pada Puja on the event of the Quantrids meteor shower, when the Supreme Pontiff of Hinduism, in a few moments from now, will be gracing in the darshan on this auspicious day. As we begin the Jayanti celebrations, we'll be having the Tulabharam celebrations next. A few devotees are offering the Tamara Tulabharam, the copper Tulabharam, at the Divine Lotus feet of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivaham now.
one of the Tula Purusha danas, or the 16 danas that one should offer in their lifetime. The Tula Purusha dana is one of the most powerful and beneficial offerings that can be made. It is where a tula, or a scale, is placed. On one side of the scale, the deity or one's guru is seated, and on the other side, various material offerings are made against the weight of one's guru or one's guru's deity. Today, the deity of the Supreme Pontiff of Hinduism is gracing in Sarva Alankara in the Rajata Angi, and for him we'll be offering the Divine Tula Bhara Seva, the Tamra Tula Bhara Seva now. This very seva has a beautiful significance from the Dwapara Yuga, when Bhagavan Sri Krishna, an incarnation and manifestation of Parandhama, Mahavishnu, played a beautiful role, beautiful leela for his consort, Devi Satyabhama, to raise in her devotion. It has so happened that after the wars of Narakasura and Banasura, Bhagavan Sri Krishna would spend so much of time with Rukmini Devi, and this brought a tremendous amount of jealousy to Satyabhama Devi. Rukmini Devi and Satyabhama Devi are the embodiments of Sri Devi and Bhudevi, the consorts of Mahavishnu, who incarnate every time he also incarnates. And of course, in all of his leelas, Narada Mahamuni plays an important role in ensuring that the devotion is blossomed. Satyabhama Devi became a little jealous of Rukmini Devi's attention that she was receiving from Bhagavan Sri Krishna, especially since she assisted him in the wars of the Narakasura and Bhanasura. She asked Narada Mahamuni how she can have Krishna alone for herself. She didn't want Krishna to spend time with anyone else or with any other work. She wanted Krishna alone for herself. With this feeling, she expressed to Narada Mahamuni, and he, knowing that Bhagavan Sri Krishna was playing his leela, attends to her accordingly. He says to her, Devi, why not you give me Krishna to me, and then you buy back Krishna from me through the Tulabhara Seva. You offer his weight in gold to me, and I will give him to you, and he will be officially yours. In this way, Satyabhama Devi understood with her logic. This made a lot of sense, as she was brought up in a wealthy environment where she would be able to get anything with just with the wealth that she had. Even at that moment, she boasted to Narada Mahamuni, that with the wealth that she has, she could offer Narada 1,000 Krishnas in weight, in gold weight. Then Narada Mahamuni agrees, and she was able to arrange the Tulabharam with Bhagavan Sri Krishna there. He seats himself on one side of the Tulabharam, and on the other side, Devi Satyabhama places her gold. She's placing her gold, and she's finding something curious is happening, that no matter how much gold she places on this side of the scale, Krishna's side of the scale does not lift at all. The logic does not add up. She's not able to understand. She's continuously placing more and more and more gold. But Krishna's side of the scale does not give up. He continues to be seated without moving an inch. She is becoming very desperate, because as she has boasted to Narada that she has 1,000 Krishnas worth of gold, that amount of gold was placed on her side of the scale, yet Krishna's side of the scale did not move. All of her wealth was depleted, and she becomes desperate and starts asking the other consorts of Bhagavan. They also help in what little way they can with whatever little gold they had, but nothing manifests, and Krishna's side of the scale still remains firmly on the ground. Then Narada says to her, it looks like Krishna has officially become mine. He takes Bhagavan by the hand and starts walking out of Dwaraka. At that moment, Satyabhama Devi, she realizes she has made a mistake. At wanting Krishna, she has lost him. And she goes and expresses her distraught to Bhagavan, Narada and Bhagavan. At this moment, Narada reminds her that
Though Bhagavan is there physically with us, he is in fact Parandhama, the Supreme Being, the Supreme Consciousness itself. And this Supreme Being is moved by alone the devotion of the devotee. Nothing else can move him. And that is why he is even there in our lives. Expressing this, Devi Satyabhama further understood. At this moment, Bhagavan speaks and shares with her, Devi, it is the time you go to Rukmini Devi and get to know how to win me back, how to get me back. Ask Rukmini Devi. Satyabhama Devi goes to Rukmini Devi, apologizes for her jealous fit, and tells Rukmini Devi, how can we have Krishna back? At this moment, Rukmini Devi, knowing that her deep devotion can bring the presence and the grace and blessings of Parandhama, of the Supreme Being, Cosmos itself, she asks for the Tulabharam to be arranged. Bhagavan is seated on one side, on his side of the scale, and Satyabhama's large mountain of wealth is placed on the other side. Then, Rukmini Devi, remembering her deep devotion to Bhagavan, every day she places a single tulsi leaf in her puja. She takes the same tulsi leaf and places it on the large mountain of Satyabhama Devi's wealth. Immediately, the scales shift. In this example, Bhagavan has showed that it is devotion alone that moves and brings the direct blessings, presence, and grace of our beloved Bhagavan, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivaham, in our lives. With this, let us also invoke the same sentiments and deep devotion of Rukmini Devi and offer the Tulabhara Seva today. Today, a few devotees are offering the Tamra Tulabharam, the copper Tulabharam. Nityanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyaadhilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami Nityanandeshwara Paramashiva Samarambham Nityanandeshwari Paramashiva Shakti Madhyamam Nityananda Pariyantam Vande Guru Paramparam Lalathe Tripundri Nitiladita Kasturi Tilagaha Spuranmaladhara Spuritakadikopi Navasanaha Dadano Dushtaram Chirasi Bhanirajam Shashikaram Pradipas Sarvesham Marunagiri Yogi Vijayate Mamopatta Samasta Duritakshay Dvara Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Prityartham Adhya Purvokta Evam Guna Viseshena Visishtayam Asyam Shubhatito Limyao Nam Yaha Dwangbing Xiao Namadheyasya Dwangbing Jia Namadheyasya Dwankun Namadheyasya Hanbao Me Nam Yaha Sakutumbhasya Cha मनसेप्सित सकल सतभीष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थम ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थम श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत श्री नित्यानंद परमशिव ताम्रतुलाभारं च करिष्ये।
ॐ राजाधिराजाय प्रसन्नसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि हरि ओम तत्सत् सर्वं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव पादुकार्पणमस्तु ओम नित्यानंदम. Thank you all for joining the Tulabhara Seva today. We will be continuing with the events of the darshan that is going to be happening in a few moments from now. Please prepare yourself. Be in a space of deep restful awareness and gratitude in your Ananda Gandha as we receive the darshan of our beloved Bhagavan today. Thank you.